हेलो एवरीवन, व्हाट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम साधना और आज मैं रिएक्शन करने जा रही हूँ द टेम्पल ऑफ ट्रेजर्स पद्मनाभ स्वामी टेम्पल त्रिवंतपुरम पे। तो शुरू करते हैं। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल, हाँ, 5 minutes storage. Which is the richest religious body in the whole world? That is a very difficult question to answer. You see, much of the wealth of many religious bodies is intangible and almost impossible to value. But going by bankers' estimates, the richest religious body was believed to be the city-state of the Vatican, with its priceless historical treasures and invaluable artwork. The richest temple in India, well, at least until about a decade ago, was believed to be the Venkateshwara temple in Tirupati, in the southern state of Andhra. And then, in 2011, an ancient temple in Kerala burst into the picture, and it proved to be way richer than both these bodies put together. Here's the story. Oh. We are at the Padmanabhaswamy temple in Thiruvananthapuram in Kerala. This temple has existed for centuries, tucked away amidst the lagoons and the coconut trees, quietly minding its own business. In 2011, a person working at the temple went to court complaining that the temple funds were being mismanaged, and the court, in all its wisdom, ordered that the temple assets be inventoried. Off went the auditors down into the underground chambers where the vaults were located, and were there surprises waiting for them. Only 6 vaults were initially declared. They found 2 more. When they entered the vaults and shone their torches in, they could hardly believe their eyes. Large containers filled to the brim with precious stones, coins and jewelry were lying scattered all over the floor. What did it include? Among other things, a necklace of pure gold 18 feet long, a solid gold throne studded with diamonds, thousands of gold chains and many thousands of golden pots, and coins, many coins. Medieval, Roman and pre-Christian era coins, some dating as far back as 200 BCE. They say there is over 1,300 tons of gold in those vaults. Add all the other treasures and the net worth of this temple is conservatively estimated at a whopping $40 billion. And that is just the material value. You see, most of these items are antiques and are in fact priceless. So how did this temple come into so much wealth? Kerala has always been a wealthy state and has been trading with Arabia, Europe and Africa for at least 2000 years. Much of this excess wealth made its way to the temple, as it usually does in India. Also for centuries, the local South Indian dynasties had been giving gifts to this famous temple. The Cholas, Cheras, Pandyas and of course the Travancore kings. Even after wars, when new kings took over, the royal patronage to the temple would continue. After all, these were their gods too. So rarely was a temple brought down. Later, between the 17th and 19th centuries, Hindu rulers seeking refuge from invading armies were often allowed to settle down in Travancore. They too used these walls to keep their wealth safe. In 1750, something very significant happened. On January 18, 1750, the then king of Travancore, Marthandavarma, walked into this temple and placed his personal sword, a symbol of his power, at the feet of the Lord. He declared that everything he owned, his entire kingdom, now belonged to the Lord, and he was only the custodian. And with that, the deity of the temple, Lord Padmanabhaswamy, officially became the king of Travancore. Marthandavarma took on the role of administrator, managing this kingdom on behalf of the Lord. Kerala became God's own country, quite literally. And all the wealth of Kerala became God's personal wealth, quietly hidden away in the temple vaults. All this wealth has been accumulating there for centuries now. Even the British recognized the shift in power. Every time the idol of Lord Padmanabhaswamy was taken out in procession, he was accorded a 21-gun salute by the British, an honor they normally reserved for friendly kings who were extra special. This transfer of power from king to God is called Trippadidana, and it created new traditions that are followed to this day. The king must visit the Lord every day and give an account of all administrative activities of the kingdom. If he fails to visit, he has to pay a fine, a princely sum of about 150 rupees a day. 300 years have passed,
but the Lord still calls the shots at Thiruvananthapuram. In 1932, when the new airport was commissioned, the king very generously donated land for its construction, with one condition. The temple procession must continue as before. You see, twice a year, Lord Padmanabhaswamy's idol is taken in procession to the beach, and the new runway came up right on its path. Did the temple procession change its route? Of course not. Twice a year, the Thiruvananthapuram airport is shut down for 5 full hours, allowing the procession to pass through. It is the kingdom of the Whoa. gods, after all, and they wait for no airplanes. So, what Yeah. happens to all this wealth now? Does it remain with God? Does it go back to the people? Does it belong to the descendants of the Travancore kings? Or does it go to the government? As you would expect, this weighty matter landed up in courts. And recently, the court upheld the rights of the Travancore royal family to continue as administrators of the temple treasures. So for now, all that wealth is safe, locked up in the underground walls of this ancient temple. But there is an exciting detail I haven't shared with Wow. you yet. There is still one vault at the temple which remains locked. Vault B. No one knows what's inside. It seems that the doors of this particular vault have the dreaded image of a snake carved on it. An ill omen. The temple priests swear that terrible things will happen if the door is opened. And so, no one has dared to open it. Yet. What secrets could it be hiding? Evil spirits? Or perhaps accounts of a royal scandal? Or unimaginable wealth? We may never know. And that may be a good thing too. Did you like the story? We have many more stories to tell and we'd love to share them with you. Do subscribe to our channel and we will keep you posted about all the exciting new videos we release. सो गाइज, जैसे कि मैंने ये वीडियो देख ली है और मैं अमेज रह गई हूँ, मेरा मुंह खुला रह गया है इस वीडियो को देखने के बाद। मतलब मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप हिंदू धर्म के बारे में जब भी आप बात करते हो या फिर हमारे एंशियंट कल्चर के बारे में बात करते हो या फिर हमारे पुराने पुराण्स के बारे में, वेदास के बारे में बात करते हो, तो आपको इमेंस नॉलेज मिलता है। और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपको दिख किया, ये सिर्फ एक टेम्पल का इतना सोना था। तो आप ये सोचो कि कितना सोना ब्रिटिशर्स यहाँ से लेके गए होंगे, मुगल्स यहाँ से लेके गए होंगे, इतने बार अटैक्स करते थे, इतने बार लेके। सोमनाथ टेम्पल के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सुना है, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि एक दरवाजे के पीछे इतना कुछ और 20 दरवाजे के पीछे क्या होगा वो नहीं पता। और मेरे हिसाब से खोलना भी नहीं चाहिए, अगर ये पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं खोलेंगे तो कुछ मतलब ख़राब हो सकता है, तो मेरे हिसाब से नहीं खोलना चाहिए। और आज तक किसी ने डेयर भी नहीं किया उसको खोलने का। तो मतलब रियल में मतलब चाहे लोग कुछ भी बोले, डरता हर कोई है अंदर से, ठीक है। बट ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी है वीडियो, बहुत अच्छी लगी, बहुत नॉलेजेबल लगी। और फाइनली इंडिया इज़ द रिचेस्ट, मतलब इंडिया हैज़ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, सो दैट मेक अस प्राउड ऑब्वियसली। और सी लाइक क्या था इस वीडियो में, मैं अमेज रह गई। और पता है जब मैं वीडियो देख रही थी ना, तो बीच में मेरे हाथ में से गूज बम्स आ रहे थे कि मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कितनी रिच है, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें कितने वैल्यूज़ है। मतलब आप ये एग्जाम्पल देखो, कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया और भगवान उस उनके राज्य को रूल कर रहे थे। तो ऑब्वियसली वो वेल्दी राज्य कैसे नहीं होना चाहिए था, वो बहुत वेल्दी राज्य था, ऐसे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा था उस स्टेट में। तो वो दिख रहा है अभी भी, है ना। और लेकिन मेरे को वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मस्त लगी। और मैं अमेज रह गई इतने सारे फैक्ट्स सुन के, जो सुपर स्पीचलेस छोड़ दिया। और मतलब मैं बस सबको यही बोलना चाहूँगी कि आपको एक बार पढ़ना चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में और अपने कल्चर के बारे में और अपने वेदास के बारे में, अपने पुराण्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो आप किसी को बोलोगे ना ऐसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे अपने कार्तिकेय 2 वाली वीडियो के नीचे कि आप कैसे बोल सकते हो भगवान है ही है या नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे अपने नीचे कमेंट्स में। तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप पहले पढ़ो, पता करो, रिसर्च करो, फिर जाके बहस करना, है ना। मतलब क्योंकि इंडियन धर्म में हर चीज़ का लॉजिक है,
तो अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको हर चीज़ का लॉजिक मिल जाएगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि घर पे बैठे हुए हो, सो के उठे और किसका भगवान, कौन सा भगवान, ये चीज़ है। बट बहुत ही मस्त वीडियो था, बहुत ही मस्त वीडियो था। और मेरे को आई होप आपको भी कुछ नॉलेज मिला होगा इससे, जिनको नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ें पहले से पता होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं पता होगी। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा इससे। और रियल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मे बी ये ऐसी फैक्ट्स वीडियो और भी डालते हैं, तो आपको उस चैनल से और भी फैक्ट्स वीडियो मिल जाएंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल सी यू सून इन योर कमेंट वीडियो। टिल देन बाय बाय।